हेलो एवरीवन आमर ओपीएससी रो ए वर्षर प्रिलिम्स एग्जाम अक्टोबर लास्ट वीक रे कंडक्ट होबा जाउची तो तापे हमें मॉक टेस्ट डिस्कशन करबा। ए मॉक टेस्ट रे हमें विभिन्न सब्जेक्ट रो क्वेश्चन को इनक्लूड करबा। जेमति मु आजी मॉक टेस्ट रो पार्ट 1 वीडियो एटा मु ए मॉक टेस्ट 1 टा चारिटा पार्ट रे नै के आसीबी। पार्ट 1 रे आज डिस्कशन करबा पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी रो क्वेश्चन। एथरे मु 5टा पॉलिटी क्वेश्चन, 10टा जियोग्राफी क्वेश्चन और 5टा इकोनॉमी रो क्वेश्चन इनक्लूड करछि। टोटल 20टा क्वेश्चन आज डिस्कशन करबा। नेक्स्ट पार्ट 2 रे हमें मॉडर्न हिस्ट्री देखिबा। पार्ट 3 रे हमें सेमिति हमर आर्ट एंड कल्चर रो क्वेश्चन देखिबा और पार्ट 4 रे एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री और एनवायरनमेंट रो क्वेश्चन डिस्कशन करबा। वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व हम आपण मानक कहि रखिबी जदि आपण मानक मोर प्रयास भल लागु थाए ताले आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, वीडियो को लाइक कर नियंतु और आपण सांग मानक सहित शेयर कर नियंतु। देखो एटा होचे हमर ओपीएससी प्रिलिम्स रो मॉक टेस्ट, किंतु एटा खाली ओपीएससी प्रिलिम्स हेल्पफुल हेबोनी। एटा जो एग्जाम रे भी हमर जनरल स्टडीज इनक्लूड अछि। ए वीडियो देखला परे आपण माने सबुथरे एथरो माने आर हेल्प नै परबे सब एग्जाम रो जनरल स्टडीज पई। तबे चलंतु स्टार्ट करबे आज रो मॉक टेस्ट। फर्स्ट हमें पॉलिटी रो क्वेश्चन देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन हला द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया मीन्स। इंडिया रो जो सॉवरेनिटी रो अर्थ कोन पचारला। देखो ये किसी स्टेटमेंट देछि। फर्स्ट स्टेटमेंट है नो एक्सटर्नल पावर कैन डिटेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड है सिटीजन्स कांट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन एनी ग्राउंड्स। थर्ड है देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ये जो तीनटा स्टेटमेंट देला एमानक मधुर केतेटा करेक्ट अछि पचारछि। आमे क्वेश्चन को भलो भाबरे पढिबा पडिबो एटी करेक्ट पचारिछि ना इनकरेक्ट पचारिछि ताको धरि के हमर आंसर चेंज हे जिवो। तो एठी हमहु पचाछि केतेटा स्टेटमेंट एथरे करेक्ट अछि। ऑप्शन रे अछि ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 ना नॉन पचारला। तो फर्स्ट हमें गोटे गोटे स्टेटमेंट देखिबा कोटा हमर करेक्ट अछि। देखो एठी हमर केवल ऑप्शन 1 ही करेक्ट अछि। तो आर करेक्ट आंसर होबो ओनली 1 इज करेक्ट। मैं एक्सप्लेनेशन देखिबा, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिबा। तो हमर sovereignty simply implies that India is a state that takes its own decision ultimately guided by the people. sovereignty रो अर्थ कोन? इंडिया होची गोटे स्टेट जे कि तार ओन डिसीजन नै परिबो कार ना पीपल मानक गाइडेंस द्वारा। नो एक्सटर्नल एजेंसी डिटेक्ट द टर्म्स टू इंडिया। हमर इंडिया रो टर्म को कोहले एक्सटर्नल एजेंसी डिटेक्ट करि परिबो नै। तो ये ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिटेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एटा ठीक अछि। ऑप्शन बी देला सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी ग्राउंड। सिटीजन माने डिस्क्रिमिनेटेड हेई परबेनी कोनोसी मध्य ग्राउंड रे पचला। तो एटा भूल अछि काहे ना आर अर्थ नै जे द नेशन ऑफ सॉवरेनिटी डज नॉट स्लीप इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक राइट्स। फॉर एग्जांपल सॉवरेनिटी स्टेट might very well discriminated between its citizens. Jemte a sovereign state may very well restrict freedom of speech as it is not an absolute right. Freedom of speech da absolute right nahi. आकु जत्ते बेले मध्य कोन करि परिबो ना आकु हटे दिया जाय परिबो। तो there is a freedom of speech and expression of Indian citizen. Indian citizen मानक पई सबु बेले freedom of speech available नाही। तो ऑप्शन 3 टा मध्य एटे कोन हबो? भूल हबो। करेक्ट आंसर हबो ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एटे पुनी दिटा स्टेटमेंट देला कोन देछि? पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी विथ ए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड देला ए बैलेंस्ड फेडरल स्ट्रक्चर मैंडेट्स दैट द स्टेट्स एंजॉय फ्रीडम विदाउट एनी unsolicited interference from central government with respect to matters which exclusively fall within states domain. एटे क्वेश्चन पचला कोन ना ए क्वेश्चन मानक मधुर कोटा इनकरेक्ट अछि। ध्यान देंतु इनकरेक्ट अछि माने कोटा भूल अछि, को स्टेटमेंट भूल अछि पचला। तो एटे देखन तार एक्सप्लेनेशन देखिबा। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी विथ ए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is a part of basic structure of Indian constitution. Parliamentary democracy दा गोटे कैबिनेट गवर्नमेंट रो सी होची बेसिक स्ट्रक्चर हमर होची पार्ट। काहे ना हमर फर्स्ट आर्टिकल कोन कहूची? इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया होची
गोटे यूनियन ऑफ स्टेट रे कौन अच्छी ना पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी अच्छी विथ ए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी। तो ऑप्शन 1 टा एठे कौन हम ऑप्शन 1 रे हमर देथिला कौन इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देला। तो ऑप्शन 1 टा एठे कौन अच्छी ठीक अच्छी। ऑप्शन बी कथा देखिबा द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैंडेटेड ए फेडरल बैलेंस wherein independence of a certain required degrees is assured to the state governments as opposed to the centralism. A balanced federal structure mandates that union does not usurp all powers and the states enjoy freedom without any unsolicited interference from the central government with respect to matters which exclusively fall in their domain. तो आमर इंडिया कौन अच्छी ना आमर स्टेट मानकर गोटे यूनियन किंतु आमर स्टेट मानक एठी किछि फ्रीडम मिलछि जोटा सेमानकर डोमेन रे आस्तुबो सेमानक अंडर रे आस्तुबो ताकू सेंट्रल गवर्नमेंट किछि हेले सेथरे इंटरफेयर करि परिबो नै। तो एठी ऑप्शन बी मध्ये कोन अछि ए स्टेटमेंट भी पूरा पूरी ठीक अछि। तो से हमहु पचाथिला इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोठा एठी तो दीटा जाको स्टेटमेंट ठीक अछि तार आंसर हबो कोन नेदर 1 और नॉर 2 हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा consider the following statement regarding the observations made by Supreme Court with respect to right to privacy पई किछ स्टेटमेंट देछि हम देखिबा क्वेश्चन पचाछि ना कोटा ठीक अछि पचाछि करेक्ट आंसर पचाला। तो चारटा जाको को स्टेटमेंट हम देखिबा फर्स्ट स्टेटमेंट देला राइट टू प्राइवेसी इज एज sacrosanct as human existence and inalienable to human dignity and autonomy. Option B statement 2 देला this is an absolute right। तो एटा absolute right नहीं एटा भूल हबो। Any surveillance done on an individual by the state is an infringement of the person's right to privacy. Any violation of rights to privacy by the state in national interest has follow procedures established by law। जदि हमार करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखिबा हमर कोर्ट पॉइंटिंग करछि तार जजमेंट को केस रे ना केएस पुत्तुस्वामी केस रो जजमेंट कोन अछि ना राइट टू प्राइवेसी इज एज sacrosanct as human existence and inalienable to human dignity or autonomy। तो एठी ऑप्शन 1 टा कोन अछि ठीक अछि। व्हाइल कोर्ट पुनी एग्री कला कोन ना इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एटा गोटे एब्सोल्यूट राइट नाही। तो एठी ऑप्शन अछि कोन दिस इज एन एब्सोल्यूट राइट। तो ए स्टेटमेंट एठी कोन हबो भूल हबो। द कोर्ट हैज सेड एनी रेस्ट्रिक्शंस मस्ट नेसेसरली पास constitutional scrutiny. Any surveillance or snooping done on an individual by the state or any outside agency is a infringement of that person's right to privacy। तो एटी ऑप्शन 3 कोन अछि ठीक अछि। Hence any violation of that right by the state even in national interest has to follow procedure of establishment by law। तो ऑप्शन 4 मध्ये एठी ठीक अछि। तो एठी से पचाथिला कोटा हमर करेक्ट आंसर पचाथिला करेक्ट आंसर जो देखिबा हमर एठी तीनटा स्टेटमेंट ठीक अछि। तो आंसर होछि ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी मानक पई हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोन कोन हमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछि। स्टेटमेंट देला क्वेश्चन पचाछि कोटा करेक्ट पचाछि तीनटा स्टेटमेंट अछि हम देखिबा कोटा हमरो करेक्ट अछि। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in the territory of India having a distinct language, script or culture of its own have the right to conserve the same। स्टेटमेंट एठी करेक्ट अछि। एटा हमर को आर्टिकल रे लेखा अछि ना आर्टिकल नंबर 29 एटा कहला all minorities whether based on religion or language have the right to establish and administer educational institutions for their choice। एटा मध्ये अछि हमर आर्टिकल 30 रे लेखा अछि। तो ए क्वेश्चन ए स्टेटमेंट मध्ये ठीक अछि। नेक्स्ट देला ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैज बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट को द्वारा गोटे स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रो अपॉइंट होंती ए स्टेटमेंट हमर ठीक अछि आ एटा हमर लेखा अछि आर्टिकल 350 रो क्लॉज ए रे लेखा अछि तो एठी हमर तीनटा जाक स्टेटमेंट ठीक रहिला करेक्ट आंसर कोन हबो ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो क्वेश्चन पचारला को स्टेटमेंट जाक करेक्ट पचारछि देखिबा स्टेटमेंट कोन अछि access to justice for the weaker sections of the society is a constitutional mandate to ensure fair treatment under Indian legal system. Next है equal justice and the free legal aid is one of the directive principles of state policy under the Indian Constitution. Option 3 nala Legal Services Authorities Act 1987 was enacted by Parliament for organized local adalatas outside the formal adjudiciary system to address the problems of the crowded cases. तो एठी हमरो तीनटा जाक स्टेटमेंट ठीक अछि देखिबा तार डिटेल एक्सप्लेनेशन आंसर बार कोन एठी ऑल थ्री आर करेक्ट हबो देखंदु access to justice for the poor is a constitutional mandate to ensure fair treatment under our legal system. तेनु लोक अदालत को कोन करा जायछि एस्टैब्लिश करा जायछि to make justice accessible and affordable to all. तो एठी हमरो एठी देखंतु स्टेटमेंट ए आंसर स्टेटमेंट 1 हला कोन अछि ठीक अछि it was formed to address the problem of crowded case dockets outside the formal adjudiciary system ए जो लोक अदालत को क्रिएट करा जायछि लोक अदालत रो काम कोन ना ये एड्रेस करिवो प्रॉब्लम ऑफ क्राउडेड केसेस आउटसाइड द फॉर्मल adjudiciary system को तो आ अनुसार एठी ऑप्शन 3 मध्य ठीक है गला ऑप्शन 2 कोन देला ना हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रो 42 नंबर अमेंडमेंट जो 1976 मसिया रे हेतला सेतिर गोटे आर्टिकल को इंक्लूड करा गला को आर्टिकल ना आर्टिकल नंबर 39 रो ए को से आर्टिकल 39 ए रे कोन कोआ जायछि ना इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड विषय सेतिर लेखा अछि टू दिस एंड द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट तो आ अनुसार हमरो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 इनेक्ट कराला पार्लियामेंट रे आ एटा फोर्स हमर केम इनटू फोर्स केबे आसिला 1995 रे एटा फोर्स को आसिला टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू weaker sections of the society and to organize local adalatas to secure that operation and legal system promotes justice on basis of equal opportunity. तो ये थिला हमर पॉलिटी रो 5टा क्वेश्चन वर्तमान में जियोग्राफी रो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा फर्स्ट क्वेश्चन हला द इवेंट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर वाज विटनेस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डायनासोर मानकर एक्सटिंक्शन डा हमर को पीरियड को बिलोंग करछु पचारला ऑप्शन रछि जुरासिक त्रियासिक प्लेस्टोसिन आउ क्रेटोसियस तो हमर गोटे एनसीईआरटी रे गोटे एनसीईआरटी बुक रे गोटे चार्ट अछि से चार्ट रो क्वेश्चन डा आछि देखंतु एटा होछि हमर एनसीईआरटी बुक रो से चार्ट टा जोठी हमर एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर को पीरियड को बिलोंग करछि देखंतु ना ये जुरासिक एटा देखो एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर का को बिलोंग करछि ना हमर क्रिटासियस को बिलोंग करछि तारा करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी तो हमर जियोग्राफी रो एनसीईआरटी बुक रे जो सब चार्ट गुडा को अछि से चार्ट गुडा को हमर प्रीलिम्स पे एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट सेथरो हमर डायरेक्ट क्वेश्चन हमर फ्रेम होय थाए तो आपण माने एनसीईआरटी बुक पढला बेले से चार्ट गुडा को भलो भाबरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन हला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सील्ड वोल्कानो हमर सील्ड वोल्कानो विषय रे किछि स्टेटमेंट देला असे पचाछि को गुडा को करेक्ट पचारला स्टेटमेंट गुडा को देखिबा सील्ड वोल्कानोस आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्कानोस ऑन द अर्थ ऑप्शन बी देला हाइवान वोल्कानोस आर द एग्जांपल ऑफ सील्ड वोल्कानोस ऑप्शन स्टेटमेंट 3 देला दिस वोल्कानोस आर वेरी स्टीप इन नेचर देला तो एठी हमर करेक्ट पचारछि एठी हमर ऑप्शन ए गोटे ही स्टेटमेंट करेक्ट हबो से करेक्ट स्टेटमेंट कोटा ना स्टेटमेंट दुईटा ही होची एठी हमर करेक्ट आंसर हाइवान वोल्कानो रो जते सब एग्जांपल होची सील्ड वोल्कानो रो
ऑप्शन ए को कहीं हमर भूल हम देखिबा तो सील्ड वोल्केनो फर्स्ट हम सील्ड वोल्केनो रो डेफिनेशन देखिबा सील्ड वोल्केनो कोटा ना बेरिंग द बासाल्ट फ्लो द सील्ड वोल्केनोस आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोस ऑन द एर्थ देला सील्ड वोल्केनो bearing the basalt flows the sealed volcanoes are the largest of all volcanoes on the earth और जो हाइवेन volcanoes होची मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ सील्ड volcano these volcanoes are mostly made of basalts a type of lava that is very fluid when erupted for this reason these volcanoes are not steep तो सी कौन देला ना जेहेतु एथिरे बासालाट अछि लाभा आकार रे अछि एमाने जेतलो इरप्ट होंदी एडा ए लाभा गुडा को वेरी फ्लूइड माने बोही कि जांदी तेनु एडा कोन अछि ए वोल्केनो गुडा को स्टीप नाही they become explosive if somehow water gets into the vent otherwise they are characterized by low explosivity तो एठी हमरो हाइवेन वोल्केनो जते हाइवेन द्वीपपुंज रे जते सब वोल्केनो अछि सब गुडा हमरो सील्ड वोल्केनो रो एग्जांपल होटे नेक्स्ट हला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स earthquake ऊपर पे हमरो किछ स्टेटमेंट देला एठी बजे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बाछबा कोटा हमरो भूल अछि स्टेटमेंट 1 देला in an earthquake greatest damage usually occurs closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center बचला जे जतला हमर earthquake होची हमर ग्रेटेस्ट डैमेज डा कोठी होची ना एपिसेंटर पाखर होची और एपिसेंटर हमर जते दूर को दूर होजबा डैमेज डा कम होची तो एटा ए स्टेटमेंट कोन अछि से पूरा पूरी हमर ए स्टेटमेंट ठीक अछि एपिसेंटर रे हमर ग्रेटेस्ट डैमेज होची एपिसेंटर रो हमें जते दूर को जबा हमर डैमेज डा कम होची द वेलोसिटी ऑफ द earthquake waves remain constant as they travel through materials with different density रो material रे जतलो earthquake गति करची तारो वेलोसिटी डा कांस्टेंट रहउची बोली देला तो एटा हमर कोन हबो तार वेलोसिटी एठी कांस्टेंट रहउनी तो जेतेबेला हमर डिफरेंट रो डेंसिटी रे हमर गति करची तार वेलोसिटी कमुची बा बढ़ुची तो एठी ऑप्शन बी टा हमर इनकरेक्ट हबो से पचाची हमर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोटा तो आंसर हबो ओनली 2 बी नंबर टा होची हमर ऑप्शन बी होची एठी करेक्ट आंसर देखो तार एक्सप्लेनेशन हमें देखिबा when the lithospheric plates move the surface of the earth vibrates जेतेबेले lithospheric plate कोन करबो मूव करबो एथरे कोन सृष्टि होबो वाइब्रेशन सृष्टि होबो ए वाइब्रेशन डा ट्रैवल करबो ऑल अराउंड द अर्थ से गोटे जगह रु पूरा अराउंड द अर्थ चारिवाडे से ट्रैवल करबो ए वाइब्रेशन को हमें कहउचंदी earthquake बोली कहउचंदी द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस जतल मनर जदी एठी हमर वाइब्रेशन डा स्टार्ट हला आ ये कोन होला चारि दिगो को गति कला तो ए जो सेंटर टा को हमें कहबा कोन ये हला हमर फोकस द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर मनर ए जगह रे हमर सृष्टि हला earthquake एटा होची हमर पृथ्वी तो ए जो सेंटर रु पृथ्वी रो ए ऊपर भाग एटा होची हमर एपिसेंटर vibrations travel outwards from the epicenter as waves greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center तो हमरो एपिसेंटर रे जो डैमेज टा होची एठा हमरो ग्रेटेस्ट होची ए एपिसेंटर रु जते हमरो दूर को जीवो हमरो डैमेज टा कोन होची कम हे जाउची the velocity of earthquake waves changes as they travel through materials with different densities the denser material the higher velocity their direction also changes as they reflect or refract when coming across materials with different density तो जत्ते बेले हमरो एठु से एपडा आसिला माने ऊपर को आसिला से विभिन्न प्रकार डेंसिटी जेमते हमरो एठी हमरो लिक्विड थिबो लिक्विड लार्वा थिबो एठी सॉलिड मटेरियल थिबो ए सब रे गला बेले डिफरेंट डेंसिटी रे गला बेले तार कोन होची वेलोसिटी डा कमुची बा बढ़ुची हमरो डेंसिटी को देखिकी नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following are the regions that can be attributed to the frequent landslides and debris avalanches in Himalayan region तो Himalayan region रो
हमर लैंडस्लाइड आउ डेब्रिज अवलांचेस विषय रे किछि स्टेटमेंट देला कोटा हमर पचारला कोटा रीजन पचारला हिमालयन रो लैंडस्लाइड पे कोटा कोटा रीजन देला स्टेटमेंट देला द हिमालयस आर टेक्टोनिकल स्टेबल दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ sedimentary rocks and unconsolidated deposits the slopes are very steep तो ये ऑप्शन ए को जो देला द हिमालयंस आर टेक्टोनिकल स्टेबल देला ये स्टेटमेंट एठी हमर कोन अछि इनकरेक्ट अछि ये स्टेबल नाही ऑप्शन बी देला कोन स्टेटमेंट 2 देला दे आर मोस्टली मेड ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स एटा ठीक अछि सेडिमेंटरी रॉक रे तयारी आ अनकंसोलिडेटेड डिपोजिट रो तयारी हेछि आ तार स्लोप गुडा को वेरी स्टीप मध्य एटा भी ठीक अछि तो सी पचाचे हमर करेक्ट कोडा तो एठी दीटा स्टेटमेंट करेक्ट अछि आंसर हबो ओनली 2 एक्सप्लेनेशन देखंतु हमर रीजन कोन रीजन दैट कैन बी एट्रिब्यूटेड द फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड और डेब्री अवलांचेस ऑफ हिमालय रीजन होची हिमालयस आर टेक्टोनिकली एक्टिव ये स्टेबल नाही हिमालयन ना हमर कोन होची एबे मध्ये एक्टिव अछि तेनु सेटा टेक्टोनिकली अनस्टेबल हबो दे आर मोस्टली मेड ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स और अनकंसोलिडेटेड सेमी कंसोलिडेटेड डिपोजिट्स रु तयारी और स्लोप जाको वेरी स्टीप होटे तो ए तीनटा कारण होची हमरो हिमालयन रो लैंडस्लाइड रो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग earthquake wave हमरो earthquake रो जो वेव आसी हम देखले से वेव रो रिगार्डिंग केतरा क्वेश्चन स्टेटमेंट देला सेतिर हमरो करेक्ट स्टेटमेंट कोडा पचाची तो p waves moves faster than s wave p wave s wave डू faster move करची ऑप्शन स्टेटमेंट 2 देला p wave travel only through solid medium whereas s wave travel through both solid and liquid सेमते 3 देला surface waves are most destructive than body waves तो हम यार डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिबा हमरो जतो earthquake रो वेव होची से बेसिकली दी टाइप रो गोटेला बॉडी वेव आउटेला surface wave body wave generates due to the release of energy at the focus and moves in all directions traveling through the body of the earth हमरो body wave केतळ जनरेट होची body wave जनरेट होची जेतळ एनर्जी रिलीज होची कोठी फोकस रे आ से कोन करची फोकस टू ऑल डायरेक्शन रे पृथ्वी एड को गति करची से गति कला बेले से विभिन्न डायरेक्शन देकी जाउची अर्थ को देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव सेमती बॉडी वेव हमर दी प्रकार अछि गोटेला पी वेव आउटेला एस वेव पी वेव्स मोस्ट फास्टर पी वेव जाउची फास्टर जाउची एंड आर द फास्ट टू अराइव द सरफेस आ से प्रथमे हमर सरफेस को हिट करची these are also called primary wave बोली हम ताको कहबा p waves are similar to sound wave आ p wave होची sound wave जेपरी p wave होची similar से माने ट्रैवल करचोंदी थ्रो गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल तीनटा जाको मटेरियल रे से माने जाई परचोंदी किंतु s wave कोन करची सरफेस को टिके टाइम लैग रे आसुची देरी रे आसुची आ ताको हमें सेकेंडरी वेव कहउचोंदी आ गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट s wave रो कोन that they can travel only through solid material secondary wave da only solid material re jauchi surface waves are the last to report the seismograph these waves are more destructive they cause displacement of rock hence collapse of structure occurs तो एठी ऑप्शन रे देखंतु कोन हमरो इनकरेक्ट करेक्ट पचार थिला तो एठी ऑप्शन 1 टा हमरो कोन अछि इनकरेक्ट अछि p waves moves faster than s waves देला तो surface wave कोन करछि p waves move faster and are the fast to arrive the surface ऑप्शन 1 टा ठीक अछि a p wave travel through solid material whereas s wave travel through both solid and liquid हमें एठी देखले s wave कोन करछि ओनली सॉलिड रे जाउछि तो s wave एठी पचला p wave travel only through solid तो एटा भूल हबो s wave only सॉलिड रे जाउछि ऑप्शन 2 टा एठी भूल अछि ऑप्शन 3 ठीक अछि तो आर करेक्ट आंसर हबो कोन ना ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट 1 और 3 होछि करेक्ट ऑप्शन 2 टा होछि इनकरेक्ट
Next question, consider the following statement. A fault is a place with a long break in the rock that forms the surface of the earth. Statement 2 dela, when an earthquake occurs on one of the fault, the rock can on one side of the fault slips with respect to the other. Option 3 dela, Indonesia is not located on the fault lines in the Pacific basin. तो आमे एठी आर एक्सप्लेनेशन रे देखिबा फॉल्ट कोन फॉल्ट होची गोटे प्लेस विथ ए लॉन्ग ब्रेक इन द रॉक रो गोटे फाट दैट फॉर्म्स द सरफेस ऑफ द एर्थ एटा कोड तयारी होची एर्थ रो सरफेस रे तयारी होची तो आ बेसिस रे हमरो एठी स्टेटमेंट 1 टा कोन अछि करेक्ट अछि when an earthquake occurs on one these faults the rock on one side of fault slips with respect to another जतबेला फॉल्ट रे हमर earthquake occur होची तार गोटे पार्श्व कोन होची अन्य पार्श्व अपेक्षा स्लिप हे जाउची खसी जाउची तो एठी ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 मध्ये एठी ठीक अछि स्टेटमेंट 3 दला कोन इंडोनेशिया इज नॉट लोकेटेड ऑन द फॉल्ट लाइन ऑफ पैसिफिक बेसिन जदि हमें देखिबा इंडोनेशिया कथा द कंट्री इज मोर देन 270 मिलियन पीपल इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय earthquake इंडोनेशिया रे हमर प्राय सब बेले earthquake आसी थाए volcanic eruption आसी थाए सुनामी मध्ये आसी थाए बिकॉज़ कम बाय ना आर लोकेशन ऑन द आर्क ऑफ volcanoes and fault line in the Pacific basin is known as ring of fire the area spans 40,000 km and where the majority of the world's earthquake occur काहे ना इंडोनेशिया हमर कोड जाउची रिंग ऑफ फायर रो सरफेस एरिया रे जाउची रिंग ऑफ फायर रे हमर प्राय वर्ल्ड रो मेजर earthquake देखा जाय तनो एटे इंडोनेशिया इज नॉट लोकेटेड ऑन द फॉल्ट लाइन देला तो एटा हमर भूल हबो एटे दीटा स्टेटमेंट केवल ठीक अछि आंसर होची ओनली 2 इज द करेक्ट दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 होची एटे इनकरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन किस मैच ऑफ द फॉलोइंग रो क्वेश्चन दला पचाची रेडिएशन फॉग कोन एडवेक्शन फॉग कोन और वैली फॉग कोन रेडिएशन फॉग कोडा ना रेडिएशन फॉग डा हमर साधारणतः में ग्राउंड फॉग कहताउ ताको जोडा हमर कुहुडी को ये केते बेले तयारी होची ना एपिसोड्स लास्ट फॉर ए फ्यू मॉर्निंग्स ऑन अकाउंट ऑफ calm wind and western disturbances resulting in localized fog formation तो रेडिएशन फॉग रो कोडा हबो ऑप्शन ए को ऑप्शन सी हबो करेक्ट इन कंट्रास्ट जदि एडवेक्शन फॉग कथा देखिबा इज ए लार्जर स्केल बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड कवर्ड एंड ड्यूरेशन ये कोन होची ना हमरो रेडिएशन फॉग डा स्मॉल एरिया रे गोटे लोकलाइज्ड फॉर्मेशन रे होची किंतु एडवेक्शन फॉग डा बोथ ऑफ टर्म एरिया रे ये कोन अछि ड्यूरेशन आर अधिक आ ये बड़ एरिया को कवर करची एडवेक्शन फॉग फॉर्म्स when warm moist air passes over cool surface गोटे cool surface रे जेताबेले हमर warm moist air pass करिवो सेताबेले हमर ये कोन करिवो ना वाटर वेपर को कंडेंस करिवो आ एडवेक्शन फॉग सृष्टि हेबो तो एडवेक्शन फॉग रो अर्थ ऑप्शन ए इट फॉर्म्स व्हेन warm moist air passes over cool surface causing water vapor to condense valley fog जदि देखिबा valley fog which is the result of mountainous preventing dense air from escaping and which the fog is trapped in the below of the valley and can last for several days and freezing fogs which is the result of liquid droplets freezing on solid surface cloud covered mountain tops often see freezing fog so valley fog koda na it is the result of mountain preventing dense air from escaping and which the fog trapped in next question consider the following statements kon kon dela statement देखिबा the ocean warming increases the frequency of tropical cyclone winds and rainfall as well as an increase in extreme waves statement 2 dela the productivity of the ocean increases when the carbon emission from the atmosphere are sunk by it तो ये पचारा एठू कोटा हमर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पचारा एक्सप्लेनेशन हमें देखिबा ड्यू टू ग्रीनहाउस गैस एमिशन ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस हायर देन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल देयर इज ए वास्ट एविडेंस
that this has serious consequences for ecosystem and human being. IPCC रो स्पेशल रिपोर्ट अनुसार ओशियंस एंड क्रायोस्फीयर जोटा हमरो जो रिपोर्ट हमरो 2019 रे पब्लिश हेतिला से कोन रिवील करछि दैट द ओशियन इज 0.8 डिग्री वार्मर देन द प्री इंडस्ट्रियल एज. It is more acidic and less productive because the carbon emission that was sunk by the ocean. The impact of ocean warming would be the increase in the frequency of tropical cyclone winds and rainfall, as well as increase in extreme waves, all of which would be accompanied by rise in relatively sea level. तार correct answer होबो कोटा एटी स्टेटमेंट दुईटा हमर कोन अछि इनकरेक्ट अछि और स्टेटमेंट 1 अछि करेक्ट अछि. नेक्स्ट हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ अफ्रीका ड्रेन्स इनटू मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन सी रे हमर निम्नलिखित मध्यरु को नदी मेडिटेरेनियन सी रे पड़छि. ऑप्शन कोन अछि कांगो रिवर अछि, नाइल रिवर अछि, ऑरेंज रिवर अछि और नाइजर रिवर अछि. तो करेक्ट आंसर हो चार कोन नाइल रिवर. एक्सप्लेनेशन देखो नाइल रिवर जोटा कि हमरो मेडिटेरेनियन सी रे पड़छि कोठी ना इजिप्ट रो नॉर्दर्न साइड रे. नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statement regard Delhi's geography and weather condition that contributes to air pollution. हमरो दिल्ली रो जियोग्राफी जोटा हमरो एयर पोल्यूशन करछि ता विषय रे हमरो किछ स्टेटमेंट देला. During the southwest monsoon the prevalent direction of the wind is easterly. Once the monsoon withdraws, the predominant direction of the winds changes into northwesterly. The fall of temperature also contributes the increased pollution level. तो ए स्टेटमेंट भितर कोटा करेक्ट पचारछि. करेक्ट जब देखिबा ए तीनटा जाक स्टेटमेंट एठी करेक्ट अछि. करेक्ट आंसर हबो ऑल 3. एक्सप्लेनेशन देखंतु ड्यूरिंग साउथवेस्ट monsoon the prevalent direction of wind is easterly. The winds travel from over the Bay of Bengal carrying moisture and rainfall to this part of the country. Once the monsoon withdraws, however, the predominant direction of the wind changes to northwesterly. जतले monsoon withdraw हो जाउची तो तार direction को पटे जाउची northwesterly हो जाउची. These winds carry particulate matters from crop burning Punjab to the area above Delhi and the onward down of Gangetic basin. जतले सी northwesterly हो जाउची से हमरो पंजाब एरिया रु आ ता पाखा पाखी एरिया रु कोन करची ना हमरो पार्टिकुलेट्स मानन को नै के आछी जेमति हमरो स्मोक को नै के आछी दिल्ली पटे. The fall in temperature also contribute the increased pollution level. Delhi ro temperature fall हेबा मध्ये pollution रो गोटे कारण. As it gets cooler, the inversion height, which is the layer beyond the pollutants, can't disperse into the upper atmosphere, comes down. When that happens, larger concentration of pollutants in their air hang closer to the surface and lead to the worsening AIQs. तो ये थिला हमरो जियोग्राफी रो क्वेश्चन. वर्तमान हमें इकोनॉमी रो क्वेश्चन देखिबा. फर्स्ट क्वेश्चन हैला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड. ए माने मध्यरु कोटा हमरो पब्लिक गुड नाही. तो देखो क्लीन एयर गोटे पब्लिक गुड जेहेतु आको समस्त व्यवहार करि परिबे. डिफेंस मध्ये पब्लिक गुड, रोड मध्ये पब्लिक गुड, किन फूड आइटम ता हमरो पब्लिक गुड रो अंतर्गत नाही. एक्सप्लेनेशन देखंतु सर्टेन गुड्स रेफर टू एज पब्लिक गुड्स. कौन कौन से गुडाक नेशनल डिफेंस, रोड, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ए सब होचे हमरो पब्लिक गुड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्राइवेट गुड. प्राइवेट गुड को ना क्लॉथ, कार, फूड आइटम ए सब होची प्राइवेट गुड. can't be provided through the merchandise, that is by transaction between individual consumer and producer, and must be provided by the government. Public goods are non-rival in consumption, so consuming an additional unit of the goods like public defense, clean air does not necessarily reduce its quantity or another use, and therefore the cost of adding an extra user is zero. For example, segregating the users of police security impossible, and compare this segregation users of a private good such as using water bottle. Next question है
consider the following statement regarding CIBIL score. A CIBIL score कौन statement देला CIBIL score is a 3-digit numeric summary of one's credit history that ranges from 100 to 900. It involves credit history across loan type and credit institutions over a period of time. CIBIL score is provided by the Credit Information Bureau Limited, which is authorized by the Reserve Bank of India. तो देखंतु हमर क्रेडिट इनफॉरमेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड सिबिल स्कोर होची गोटे 3 digit numerical summary of one's credit history which involves the individual's credit payment history across loan types and credit institutions over a period of time. आर रेंज होची 300 रु 900. तो एठी हमर ऑप्शन रे अछि कोन 100 रु 900. ए स्टेटमेंट एठी रॉन्ग हेला जेतु ये गोटे 3 डिजिट रो न्यूमेरिक समरी ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री बट आर रेंज होची केते 300 रु 900. तो ऑप्शन 1 एठी स्टेटमेंट 1 टा रॉन्ग हेला. The CIBIL score is provided by the Central Information Bureau of India. तो एठी CIBIL स्कोर किए दोची सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड दोची जे कि रिजर्व बैंक रो गोटे ऑथराइज्ड बॉडी. तो ऑप्शन 3 ठीक अछि और स्टेटमेंट 2 मध्ये ठीक अछि. करेक्ट आंसर होछि ओनली 2 करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. India's growth story from the eve of independence to liberalization phase is largely termed as Hindu rate of growth. It refers to Hindu rate of growth रो अर्थ कोन पचारला. ऑप्शन दला irrational development agenda driven by majoritarian society, religious belief of the successive government right from the independence, the phenomena of sluggish growth rate of Indian economy before 1990 or non-inclusive growth story of India before 1990s liberalization. The correct answer is option C. Hindu rate of growth was coined to refer the phenomenon of sluggishness in growth rate of Indian economy. 3.5% observed persistently during 1950s through 1980s. Next question. Consider the following statement. Nominal GDP is the total market value of all goods and services produced in India in a financial year. The nominal GDP derived from real GDP by removing the effect of inflation. The fiscal responsibility of budget management FRBM Act 2003 stipulates that the total borrowing cannot be more than 3% of the nominal GDP. तो एथिरे करेक्ट स्टेटमेंट कोडा पचारची देखिबा हमें आर एक्सप्लेनेशन कोन अछि. देखंतु nominal GDP कोन is nothing but the total market value of all goods and services produced in India in a financial year. गोटे फाइनेंशियल ईयर रे इंडिया रे जेते हमरो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होची ताको हमें कहबा नॉमिनल जीडीपी. तो एठी ऑप्शन 1 टा ठीक अछि. For purpose of analyzing the economy, one of one uses the real GDP, but for preparing the budget, it is the nominal GDP that matters. Real GDP derive होची हमरो nominal GDP रु जेते बेला हमें इन्फ्लेशन को रिमूव कर दोचंदी. तो एठी ऑप्शन रे देखंतु एठी देछि नॉमिनल जीडीपी डिराइव्ड फ्रॉम द जीडीपी देछि किंतु हमें एठी कोन करचंदी रियल जीडीपी हमें जे बाहर करचंदी जेते बेले नॉमिनल जीडीपी रु इन्फ्लेशन रेट घटोचंदी. तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 टा एठी भूल अछि. Once the government knows the nominal GDP, the current financial year, it uses the number of projects that likely nominal GDP in the next financial year, which is the budget is basing made. Typically, in India, as indeed the case with most developing economies, the government are focused to spend more than the earn. हमरो ये जो लिमिट सेट करछि कि ना फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट एफआरबीएम एक्ट स्टिपुलेट्स टोटल बोरोइंग not more than 3% of the nominal GDP. तो ऑप्शन 3 मध्ये एठी ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement. Inflation can never be good for a growing economy. Only a nation that has a positive trade balance can become the developed country. High public debt is always bad for economy. तो एठी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पचारला. देखिबा हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोन. High public debt is not a problem when it is being used for creation of infrastructure.
देखो एटी देला हाई पब्लिक डेब्ट ऑलवेज बेड फॉर इकोनॉमी नहीं हाई पब्लिक डेट हमर सबु बेले बेड नहीं आ ये केते बेले भलो जते बेले हमर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होची सेते बेले भलो तो ऑप्शन 3 टा एठी इनकरेक्ट अछि employment and other productivity inflation is needed for any economy to grow because inflation suggests that the demand for goods and outstrips supply in this case more production is required which leads to higher growth a positive trade balance has little relation with the creation of developments USA has a large trade deficit yet it is developed country however having positive trade balance good for economy because it means we are competitive the world export market तो एटी देखो इन्फ्लेशन कैन नेवर बी ए गुड फॉर ग्रोइंग इकोनॉमी देछि नो एटा भूल आंसर हबो काहे ना यूएसए गोटे डेवलप्ड कंट्री हेले मध्य सेठी हमर लार्ज ट्रेड डेफिसिट देखा जाउची तो ओनली ए नेशन दैट हैज पॉजिटिव ट्रेड बैलेंसेस कैन बिकम अ डेवलप्ड कंट्री नो तो एटी तीनटा जगह स्टेटमेंट भूल अछि करेक्ट आंसर हबो ऑल थ्री आर इनकरेक्ट तो ये थिला हमरो आज रे मॉक टेस्ट रो पार्ट 1 डिस्कशन पार्ट 2 रे हमें देखिबा कोन ना पार्ट 2 रे हमें देखिबा आर्ट एंड कल्चर रो 35 टा क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा तो पार्ट 1 देखि दरो आपण मानको धन्यवाद आपण माने नेक्स्ट वीडियो रे मु पुनी पार्ट 2 आर्ट एंड कल्चर विषय रे डिस्कशन करबी आपण प्लीज वीडियो को लाइक कर नियंतु चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं आपण सांग मानन सहित शेयर कर नियंतु अब मैक्सिमम रिवीजन करंतु जा फल रे हम ए वर्ष रो ओपीएससी रो प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करि परिबा थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक्स।